Hello everyone, so welcome to our day 92 of our live study with me. It's a day 92 and I welcome you all in my stream. Okay, so come and we will start our study. जी पारस मालवीय जी भाई गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया बट वी आर बैक। जी भाई थोड़ा सा लेट हो गया यार। देख रहे हो अभी जस्ट जस्ट सो कर उठा हूँ, मतलब समझ रहे हो। नींद नहीं खुली यार, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, 3 घंटा तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। उसमें उसमें मतलब कटौती नहीं होगी, ठीक है। ठीक है भाई, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, इसमें कटौती नहीं होने वाली है।
कोई ना भाई, आधा घंटा ही तो लेट हुआ हूँ यार, हो जाता। ठीक है, मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, वरना बस 2 मिनट और दे दो मुझे बस। जस्ट गिव मी 2 more minutes, that's all. एंड मैं बढ़िया हूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। याद आती है जी बोलनी। आज तो यार जस्ट सो कर ही उठा हूँ भाई। भगवान।
आती है रोज भाई, आती है। याद तो बहुत आती है, बहुत लोगों को। Explain sacrificial, anodic, and impressed current cathodic protection moved method for prevention of corrosion. अच्छा, explain sacrificial, anodic, and impressed current cathodic protection method for prevention of corrosion. Explain sacrificial, anodic, and impressed cathodic protection method for prevention of corrosion. ठीक है, बढ़िया। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस नहीं पूछा गया ना, नहीं पूछा गया फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? इन दिस मेथड द corroding metal is forced to behave like a cathode. There are two types of cathodic protection. ए है sacrificial anodic protection, दूसरा impressed current cathodic protection। तो पहला है sacrificial anodic protection. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal by a wire so that the entire corrosion is concentrated on the more active metal. The more active metal loses and get corroded, and this metal is called sacrificial anode. Metals commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminium. ठीक है जी, मनीष जी भाई, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। समझा नहीं भाई क्या लिखा। ठीक है, ठीक है। In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal by wire, so that the entire corrosion is concentrated. The metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal. Is connected to a more anodic metal by a wire, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. The more active metal loses and get corroded, and this metal is called sacrificial anode. Metals commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminium, and the alloys.
applications. Important applications of sacrificial anodyne method include protection of buried pipelines, underground cables, marine structures, etc. ठीक है, दूसरा है impressed current cathodic protection. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify corrosion current so as to convert the corroding metal from anode to cathode. Impressed current can be derived from a direct current source like battery, an inert or insoluble electrode like graphite or silica act as anode to complete the circuit. The surroundings of anode should be filled with salts and carbon to increase the conductivity. Okay, यहाँ तक एकदम बेस्ट है, तो उसको मैं लिखता हूँ. ठीक है, फिर देखो cathodic protection. Explain sacrificial anodic and impressed current cathodic protection method for prevention of corrosion. तो सबसे फर्स्ट हम देखें कैथोडिक प्रोटेक्शन. ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन. जी masterpiece जी भाई, welcome to our stream. Cathodic protection. In this method, the corroding metal is forced to behave like a cathode. In this method, दिख नहीं रहा था. ठीक है, in this method, the corroding metal is forced to behave like a cathode. ठीक है, in this method, the corroding metal is forced to behave like cathode. There are two types of cathodic protection. ठीक है, there are two types of cathodic protection. First one is sacrificial anodic. The first one is sacrificial anodic protection. और बी हमारा कैथोडिक सॉरी इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. राइट, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. ओके ओके, सो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है? देखो, इन दिस मेथड द corroding metal is get forced to behave like a cathode. ठीक है, in this method the corroding metal is forced to behave like a cathode. There are two types of cathodic protection. There are two types of cathodic protection. In this method, the corroding metal is forced to behave like a cathode. There are two types of cathodic protection. First one is sacrificial anodic protection, and impressed cathode also अलग बात है. But the corroding metal is forced to behave like a cathode. ठीक है, the corroding metal is forced to behave like a cathode. ठीक है, तो इसका ए है sacrificial anodic protection. Sacrificial anodic protection. जब sacrificial anodic protection बात करें, in this method the metallic structure which is to be protected from corrosion
is connected to a more anodic metal. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal. ठीक है, by a wire, more anodic metal by a wire. In this method, metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal by a wire so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. The more active metal loses and gets corroded, and this metal is sacrificial. This metal is called sacrificial anode. ठीक है, metals commonly employed as sacrificial anode as magnesium, zinc, aluminium and their alloys. ठीक है, ठीक है, तो देखो मुझे जो भी ठीक है, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. समझ रहे हो ना, मोर एक्टिव मेटल. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मोर एक्टिव मेटल हमारा हो जाएगा is connected to a more anodic metal and sacrificial anodic protection है. एनोड को मुझे प्रोटेक्ट करना है ना. इन दिस मेथड द मेटालिक स्ट्रक्चर is connected to a more anodic metal by a wire so that the entire origin considered this more active metal. The more active metal loses and gets corroded, and this metal is called sacrificial anode. Okay, sacrificial anode. The corroding metal is forced by the cathode. The corroding metal is forced by the cathode. ठीक है, corroding metal तो हो जाएगा ना. In this case, the metallic structure is to be protected from corrosion. ठीक है, मैं बढ़िया हूँ दोस्त. ठीक है, okay. So in this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion. Okay. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a metal. Is connected to a more anodic metal. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal. Is connected to a more anodic metal. So that the entire concentration is concentrated on a more anodic metal. अच्छा, in this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal by a wire. So that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. So that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. So that the entire corrosion is concentrated. So the entire corrosion is concentrated on this more acidic metal.
बनाओ कॉफी भाई, बनाओ पियो. In this method, the metallic structure, which is to be protected from corrosion, is connected to a more anodic metal by a wire. Okay. In this method, the metallic structure, which is to be protected from corrosion, is connected to a more anodic metal. Is connected to a more anodic metal by a wire, so that the corrosion is concentrated on this more anodic metal. More anodic metal. Entire concentration is considered on this more active metal. नहीं भाई, मैं नहीं पीऊँगा यार, मैं नहीं पीता. So that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. So that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. More anodic metal by wire. So the entire corrosion is concentrated on this more active metal. More active metal. The more active metal loses and gets corroded. This metal is called superficial anode. The more active metal loses and gets corroded. Okay, the more active metal loses and gets corroded. And this metal is called superficial anode. And okay. And this method is called superficial anode. The more active metal loses and gets corroded. The more active metal loses and gets corroded. And this method is called sacrificial anode. Metals commonly employed as sacrificial anode are employed as just commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminium, and their alloys. And their alloys. Okay. So here it is. There. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is concentrated to a more anodic metal. Okay. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal. Is connected to a more मतलब ऐसा कैथोड बिहेव करेगा ना, क्योंकि मोर एनोडिक मेटल के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ये तो ऐसा कैथोड बिहेव करेगा. और जो हमारा कोरोजन सबसे ज़्यादा एनोड पर होता है. ठीक है, तो मोर एनोडिक मेटल तो इसलिए ऐसा कैथोड बिहेव करेगा. So that by wire, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. So that the entire corrosion is concentrated on a more active metal, and the more active metal will be the metal that we will connect. Okay, by wire, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal.
the more active metal loses and gets corroded, and this method is called sacrificial anode. क्योंकि जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ना एनोड को, तो एनोड सेक्रीफाइस हो रहा है ना, खुद को सेक्रीफाइस कर दे रहा है हमारे कैथोड को प्रोटेक्ट करने के लिए. Metals commonly employed as sacrificial anode are metals commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminium, and their alloys. ठीक है. हाइड्रोजन से पहले वर्क हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन या सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो गया. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दो हो गया. सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन पोटेशियम कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक एंड देयर एलॉयज और उसके एलॉयज. ठीक है. अब देखो कैसे जैसे देखो ऐसे मान लो ये अंडर अंडर ठीक है ग्राउंड ग्राउंड है और ये हमारी देखो क्या है हमारी पाइप है. क्या है हमारा पाइप है पाइप है. ठीक है. यहाँ पर ऐसे बचा हुआ ये हाँ ठीक है. यहाँ पर ऐसे बचा हुआ तो इसलिए इसको मैं ऐसे बनाऊँगा. ठीक है. ये आयरन पाइप है. आयरन पाइप है. It will behave like a cathode. ठीक है. It will behave like a cathode. कैथोड की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. अब देखो हम लोग एक अनदर एनोड मोर मतलब एक्टिव एनोड है फिर मोर एनोडिक मेटल है ना. मोर एक्टिव होता तो मोर एक्टिव मेटल होगा. ठीक है. बट इट इज टू बी कनेक्टेड इट इज टू बी एनोडिक मेटल. हम लोग मोर एनोडिक मेटल से कनेक्ट करते हैं. मोर एनोडिक मेटल से हम लोग कनेक्ट करते हैं. मोर एनोडिक मेटल हो जाएगा. ये जो वायर है जो कनेक्ट कर रही है दोनों को ये हमारा है इंसुलेटेड कॉपर वायर. इंसुलेटेड कॉपर वायर. और ये हमारा ये भी सोडियम मैग्नीशियम क्या है तीन यूज कर सकते हैं. क्या मैग्नीशियम एल्युमिनियम और जिंक और एंड देयर अलॉयज. मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड देयर अलॉयज तीन यूज कर सकते हैं. तो मैग्नीशियम यूज करें यहाँ पर. मैग्नीशियम यूज करें एज ए सैक्रिफिशियल एनोड. सैक्रिफिशियल एनोड के तरीके. ठीक है. बढ़िया. एप्लीकेशन की बात करेंगे. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन लर्निंग मेथड इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ. ठीक है. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ sacrificial anodic production method. ठीक है. इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन. ठीक है. क्या इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन. ठीक है. इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ sacrificial anodic production method. sacrificial anodic method include production of method include protection of पहला buried pipelines
pipelines, दूसरा है अंडरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स, और तीसरा है हमारा मैरीन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, मैरीन स्ट्रक्चर्स, मैरीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है दादा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेस मेटल बाय मेकिंग इट बिहेव लाइक ए कैथोड। बढ़िया। In this method, the corroding metal is forced to behave like cathode. ये बढ़िया है ना, corroding metal is forced to behave like cathode. The method protecting the base metal by making it behave like cathode is called as cathodic protection. Obviously, now उस section में जो लिखा होगा. In this method, the corroding metal is forced to behave like the corroding metal is forced to behave like a cathode. There are two types of cathodic protection: sacrificial anodic protection and compressed current cathodic protection. Sacrificial anodic protection का, in this method, the metallic structure is to be protected from corrosion. In this method, the metallic structure which is to be protected, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a more anodic metal, is connected to a more anodic metal by a wire, so that the entire corrosion, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. The more active metal loses and gets corroded, and this method is called sacrificial anode. ठीक है, the more active metal loses and gets corroded, and this method is called sacrificial anode. Metals commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminium and their alloys. देखिए buried पाइप से, ठीक है, आयरन पाइप ऐसे कैथोड बिहेव करेगा जब हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर से एक अनदर एनोडिक मेटल को यूज करेंगे, मैग्नीशियम एज ए मैग्नीशियम, इट इज सेक्रिफिशियल एनोड, जो भी सेक्रीफाइस करते होंगे उसकी कंसनट्रेशन, कोर्सन का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा, ठीक है, जो लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेट्स कोरोडेड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेक्रिफिशियल एनोडिक प्रोडक्शन मेथड इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट बरीड पाइपलाइंस, ठीक है, और दूसरा अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है, मरीन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, बरीड पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स, मरीन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है, ये base metal is connected by a wire to a more reactive metal, so that the base metal becomes cathode and the reactive metal becomes anode. ये भी मतलब बेकार नहीं है भाई, छोटा सा बेस्ट है। Base metal is connected by a wire to a more active metal. The base metal is connected by a wire to a more reactive metal, so that the base metal becomes cathode and the more reactive metal becomes anode. है ना, बिल्कुल। In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected. In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is to be connected
connected is to be protected from. In this method, the metallic structure is to be protected from collision is connected to a more active, more anodic metal. Is connected. ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. तो ये याद कर लिया जाएगा. The base metal is connected by a wire to a more reactive metal. Now base metal is connected by a wire to a more reactive metal. So that the base metal becomes cathode and the more reactive metal becomes anode. Cathode. The underground water pipelines and water tanks are also protected by the. क्यों लिखना इतना बड़ा यार? And we have a way to write it short. No. This method, the corroding metal is supposed to behave like a cathode. Now, in this method, the corroding metal is supposed to behave like a cathode. इसमें है the method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode. Cathodic protection क्या है? The method of protection of base metal by making it behave like a cathode. The method of protecting the base metal. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode. The method of protecting the base metal. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode. Making it to behave like a cathode is called as cathodic protection. The method of protecting the base metal. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode is called as protecting the base metal by making it to behave like a cathode is called as cathodic protection. ठीक है, सब दो प्रकार का होता है. Superficial anodic और base metal is connected by a wire to a more reactive metal. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal, so that the base metal becomes a cathode and the more reactive metal become anode. ठीक है, एनोड बन जाएगा तो फिर कुछ जो कोरिजन होगा वो सब कुछ वहाँ आ जाएगा. Impressed current क्या होता है? In this method, an impressed current is applied in opposite direction. In this method, an impressed current is applied in opposite direction to nullify the collision current. In this method, an impressed current is applied in opposite direction to nullify the collision current and convert the corroding metal from anode to cathode. ठीक है. In this method, an impressed current is applied in opposite direction. Impressed current is applied in opposite direction to nullify the corrosion current and convert the corroding metal from anode to cathode. The impressed current is slightly higher than the corrosion current. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from collision. जी डायरेक्टर भाई जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम. The impressed current protection method is used for water tanks.
The impressed current protection method is used for water tanks. ठीक है, the impressed current cathodic protection method is used for water tanks, water and oil pipelines, etc. Water tank, water and oil pipelines, etc. इसमें क्या है, इसमें देखते हैं दो. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify. And again, in this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the virgin current. Okay, in this method, an impressed current is applied in the opposite direction. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current. So as to convert the corroding metal from anode to cathode. Impressed current can be derived from a direct current source like battery, an inert or insoluble electrode like graphite or silica act as anode to complete the circuit. The surroundings of anodes will be filled with salts and carbon to increase the conductivity. This type of cathodic protection has been applied to water coolers, water tanks, buried oil, and long water pipes, transmission water. बरीड पाइप में मेड कैथोड, ठीक है, ग्रेफाइट एनोड उससे क्या था, मतलब एक हमारा बरीड पाइप है जो कि एज ए कैथोड बिहेव करेगा. ठीक है जी. थैनोस जी, कैस्टी बी आर थैनोस जी पाइप विल कम टू आवर स्ट्रीम. हाय, buried pipe made cathode is the graphite anode. Source of impressed direct current, इधर एक डायरेक्ट करंट लगाया गया. ठीक है, डायरेक्ट करंट लगाया गया. तो in this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the current. ठीक है, obviously इसमें देखो एनालिटिक करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग okay, you are missing me. मिलते तो हैं, we meet daily, okay, on the regular basis in the morning, okay, so study with me. In this method an impressed current is applied in the direction. ठीक है, nullify गया, देखता हूँ. In this method an impressed current is applied in opposite direction. In this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current. In this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current and convert the corroding metal from anode to cathode. ठीक है, the impressed current is slightly higher than the corrosion current and thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. The impressed current protection method is used for water tank और आवश्यकता हो जाएगा. हमारे देखो क्या एनोड है, डीसी पावर सप्लाई, और बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक है. इसी को देखता हूँ. ठीक है, देखो कैथोडिक प्रोटेक्शन. ठीक है, cathodic protection. In this method, the corroding metal is forced to behave like cathode. ठीक है, फिर cathodic protection क्या है?
The method of protecting the base metal by making to be like a the method of protecting the base metal to behave like a cathode. From corrigan I'm making it. The method of protecting the base metal कैसे by making it by making it the method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode is called as cathodic protection. Cathodic protection. The method of protecting the base metal. The method of protecting the base metal by the method of protecting the base metal by making it behave like a cathode. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode is called as cathodic protection. Okay. It is two types. First one is cathodic. Okay. First one is sacrificial anodic protection. Impressed current cathodic protection. ठीक है. Impressed current cathodic protection. ठीक. बढ़िया. The method of protecting the base metal by making it to behave like cathode. ठीक है. The method of protecting the base metal by making it to behave like a cathode is called cathodic protection. Is called as cathodic protection. Cathodic protection is of two types: sacrificial anodic protection and the impressed current cathodic protection. Sacrificial anodic protection and the impressed current cathodic protection. So sacrificial anodic protection क्या होता है? देखो क्या था, ठीक है. तो sacrificial anodic protection, the pipe is connected by a copper wire, ठीक है, by a more anodic metal, ऐसा कुछ, ठीक है. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal so that the base metal becomes cathode and the more reactive metals become anode. Base metal is connected by a wire. Base metal is connected by a wire. So the base metal that is connected by a wire. Base metal is connected by a wire to more reactive metal. Yeah. The base metal is connected by a wire to a more reactive metal. Base metal is connected by a wire. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal
so that the base metal becomes cathode and the more it will be anode, so that the base metal become cathode and the most reactive metal become anode. Most reactive metal become anode. ठीक है, तो sacrificial anodic protection करता है. Base metal is connected by a wire. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal. Base metal is connected by a wire to a more reactive metal, so that the base metal is behave like a cathode and the more reactive metal behaves like anode. खत्म. ठीक है. Metals commonly employed as sacrificial anode are metals commonly employed as sacrificial anode are metals commonly employed as sacrificial anode are. आवाज़ आ रही है तो माइक ऑफ करता हूँ.
application of sacrificial anodic protection of includes protection of पहले pipeline gas pipeline buried pipelines दूसरा है अंडरग्राउंड केबल्स तीसरा है मैरीन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा ठीक है प्रोटेक्ट करता ठीक है ओके बढ़िया दूसरा हमारा इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन ठीक है in this method an impressed current is applied in opposite direction to nullify the collision current in this method an impressed current in this method an impressed current is applied in opposite direction in this method an impressed current is applied in opposite direction in this method an impressed current is applied in opposite direction to nullify the collision current nullify the collision current to nullify the collision current and convert the corroding metal from anode to cathode and convert the corroding metal from anode to cathode in this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the collision current ठीक है जी in this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the collision current and convert the corroding metal from cathode to cathode ठीक है जी देखते हैं in this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the collision current and convert the corroding metal from anode to cathode corroding metal को कैथोड में कन्वर्ट करेंगे मतलब समझ रहे भाई corroding metal को हम कैथोड में कन्वर्ट करेंगे corroding metal को अगर हम कैथोड में कन्वर्ट करते हैं तो करोड़ ही नहीं होगा उसमें बात है टेम्परेचर करने स्लाइडली हायर इन द इम्प्रेस्ड करंट is slightly higher than the impressed current is slightly higher than the impressed current is slightly higher than the impressed current is slightly higher than the collision current the impressed current is slightly higher than the collision current the impressed current is slightly higher than the collision current
The impressed current is slightly higher than the impressed current is slightly higher than the corrosion current. The impressed current is slightly higher than the corrosion current. Thus, the anodic corroding metal becomes cathodic. So, thus, the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. So, the anodic corroding metal, thus the anodic corroding metal becomes cathodic and thus the anodic corroding metal, thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Okay. जी. So in this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current and convert the corroding metal from anode to cathode and convert the corroding metal from anode to cathode. Convert the corroding metal from anode to cathode. The simplest current slightly higher than the corrosion current. The simplest current is slightly higher than the corrosion current. Corrosion current the impressed current is slightly higher than the corrosion current. Thus the anodic corrodic metal becomes cathodic. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. The impressed current protector method is used for water and oil lines, oil pipelines. Okay. But here it is. कैसा होगा प्रोटेक्ट कैसा होगा ठीक है जैसे मान लो ये हमारा मैंने कहा इसका पूरा प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ठीक है जी buried pipe made in a buried pipe throat buried pipe made by throat इसे नहीं फिट करना है पहले कुछ करेंगे स्विच करेंगे फिर इसे हम लोग क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे पाइप एक छोटा सा हम लोग लगाएंगे क्या लगाएंगे क्या तो एनोड ग्रेफाइट एनोड positive negative source of impressed anode cathode this is anode this is cathode source of impressed diagram source of impressed direct current
source of interest direct current, source of interest direct current, ठीक है, source of interest direct current, ठीक है, बढ़िया. buried pipe made cathode, buried pipe made cathode, buried pipe made cathode, buried pipe made cathode, that is protected, ठीक है, buried pipe made cathode, that is protected है. मन भर माए न बाजे रे बिजलियाँ, चमक चमक सुहानी सी लगे रे, जरा देखने जी. एप्लीकेशन देखते हैं. तो impressed current cathodic protection. In this method, an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current, so as to convert the corroding metal from anode to cathode. So as to convert the corroding metal from anode to cathode. Impressed current can be derived from a direct current source like battery. अच्छा हम देखा है बस and convert the corroding metal from anode to cathode. So as to convert the corroding metal from anode to cathode. Corroding metal को एनोड से कैथोड में कन्वर्ट करते हैं. buried pipe made cathode प्रोटेक्टेड, ठीक है. मेड कैथोड मतलब कि पहले एनोड था, एनोड कैथोड, ठीक है. देखो, in this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current. In this method an impressed current is applied in the opposite direction to nullify the corrosion current and convert the corroding metal from anode to cathode, and convert the corroding metal from anode to cathode, and convert the corroding metal from anode to cathode, convert the corroding metal from anode to cathode. The impressed current is slightly higher than the corroding current, thus the anodic corroding metal becomes cathodic. Anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. Anodic corroding metal raw. And on insoluble electrode, this type of cathodic protection has been applied to water coolers, water tanks, buried oil pipes. Loud production needed. Large structures are to be protected. There is a cheap source of electrical power. Yeah. The important application of protection are
water coolers use होता है, water tanks use होता है, buried oil and water pipes, water tanks, water and oil lines, buried oil and water pipes, buried oil and water pipes, buried oil and water pipes use होता है, buried oil में buried oil and water pipes इसमें buried oil and water pipes में होता है, ट्रांसमिशन टावर टीटी ट्रांसमिशन टावर में होता है, तीन बात है, तीन तीन ना this type of production is blown and now the production nature of the largest production structure these Jesus available.
right. ये कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय morning now.
So the question is, what is the chemical composition of wood and cement? Draw level diagram of rotatory kiln and kiln used for the manufacture of wood and cement by wet process and state its working. Explain the setting and hardening of cement with chemical equations. So chemical composition of Portland cement are, first one is that uh, अब देखो, what is the chemical composition of Portland cement? So the chemical composition of Portland cement are, first one calcium oxide, second one is silica, CSAMF, third one is alumina, fourth one is magnesia, and fifth one is uh, CMF EMFA magnesia ना, EMF होता है, EMF फेराइट फेराइट ना, या फिर क्या कहते हैं, फेरस नहीं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिका SiO2, एलुमिना Al2O3, मैग्नीशिया MgO और CsEMFA मैग्नीशिया फेरिक ऑक्साइड और AMF होता है, AMF होता है ना, AMF होता है, तो मैग्नीशिया और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, सिलिका 20 to 25%, एलुमिना 15 to 20%, सॉरी 5 to 10%, 20 का कम करना है, ठीक है, 50 to 60%, 20 to 25%, 5 to 10%, 10 to 15% में क्यों कह रहा हूँ यार, देखो 60, 10 70, 10 80, 10 85, 95, 5, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, सिलिका 20 to 25%, ठीक है, 25% हो गया। अब देखो क्या है इसके बाद, इसके बाद हमारा है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी हो गया, सिलिका भी हो गया, एलुमिना 5 to 10%, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया हमारा हो गया, मैग्नीशिया 5 to 10, मैग्नीशिया 2 to 3%, और फेरिक ऑक्साइड 1 to 2%, ठीक है जी। CsAMF, ठीक है, CsAMF, अच्छा, और है हमारा ड्रा बेल लेवल डायग्राम ऑफ रोटेटरी क्लेन। तो रोटेटरी क्लेन में देखो, पहले रहा मटेरियल, फिर हमारा क्लीन हो गया, इधर इधर चिमनी लग जाएगी, चिमनी, रहा मटेरियल लो, चिमनी लगाओ, लो हमारी क्लीन बना दो, क्लीन बनाए, बिल्कुल बन गया। अब ऐसे करो, यहाँ कोल्ड डस्ट लगा दो,
ऐसा करो, यहाँ पर कोल्ड डस्ट लगा दो, सामने फ़ैन लगा दो, फ़ैन के साथ कनेक्ट कर दो इसे क्लिंकर से। क्लिंकर से इधर से डस्ट, इधर से एयर आएगी, इधर से क्लिंकर से यहाँ बाहर निकलेगा जो कुछ भी है। ठीक है, बढ़िया। तो क्लिंकर्स, फैन, सब कुछ बढ़िया। यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, पहला है ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन जोन और क्लिंकरिंग जोन। 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 ठीक है। ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन जोन और क्लिंकरिंग। क्लिंकर से यहाँ आ जाएंगे, ए हमारा ऐसे रोटेट करेगा। और एक अगर लिखना हो तो लिख लो कूलिंग जोन, यहाँ पर कूल हो जाएगा चीज़ें। मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टेड सीमेंट, जरा पर लेबल डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टेड सीमेंट ना, तो द लेबल डायग्राम ऑफ पोर्टेड क्लीन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टेड सीमेंट प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टेड सीमेंट, मैन्युफैक्चर पोर्टेड सीमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टेड सीमेंट। So the skills involved in the manufacturing of portland cement are follows. The steps involved in the manufacturing of portland cement are as follows. First one is mixing, burning, grinding and packing. ठीक है, क्या है मिक्सिंग ग्राइंडिंग, नहीं सॉरी, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। ठीक है, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग और पैकिंग। लास्ट में कूलिंग भी है, लिख सकते हो बट लेकिन उतना जरूरी नहीं है। मिक्सिंग, तो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी डन बाई फर्स्ट step is mixing. So mixing of raw materials can be done by dry process, wet process. Mixing of raw materials can be done by wet process and the sorry ड्राई प्रोसेस एंड द वेट प्रोसेस। दो तरीके से रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जा सकता है। तो ड्राई प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट हार्ड। ठीक है, so the dry process will is used when the raw materials are quite hard. ठीक है जी, it is used when the raw materials are quite hard. wet process क्या होता है, it is used when for any type of raw materials। ठीक है, it is used for any type of raw materials। ठीक है जी। dry process, it is used when the raw materials quite hard। it is used when the raw materials are quite hard। wet process क्या होता है, it is used for any type of raw materials। it is used for any type of raw materials। ठीक है, it is used when the raw materials quite hard। it is used for any type of raw materials। dry process fuel consumption is low और wet process में fuel consumption is high। ठीक है, और क्या, और क्योंकि आई थिंक मैंने जो पढ़ा था कल परसों में। ठीक है, ठीक है जी। जी बुग्गू लब्बुगी, हाय भाई, भाई वेलकम टू आवर स्ट्रीम। ठीक, it is used when the raw materials are quite hard। dry process, it is used when the raw materials are it is used when it is used for any type of raw materials, that is wet process। ठीक है जी बुग्गू लब्बुगी जी, भाई अगेन वेलकम टू आवर स्ट्रीम, योर नेम इज गुड। ओके,
सो द ड्राई प्रोसेस में फ्यूल कंजप्शन लो होता है, वेट प्रोसेस में फ्यूल कंजप्शन हाई होता है. अच्छा, ड्राई प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस and the wet process is a comparatively faster process. अच्छा, cement produced is of inferior quality. Cement produced is of inferior quality and the wet process cement produced is of superior quality. अच्छा, ड्राई प्रोसेस में बात किया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस. ड्राई प्रोसेस में बात किया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस एंड वेट प्रोसेस में बात किया जाए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज समवॉट हायर. ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हायर है. ठीक है जी. ड्राई प्रोसेस बात किया जाए तो इट इज़ यूज व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट हार्ड. वेट प्रोसेस बात करें तो इट इज़ यूज फॉर एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स. एंड ड्राई प्रोसेस बात करें तो फ्यूल कंजप्शन इज लो. वेट प्रोसेस बात करें तो फ्यूल कंजप्शन इज हाई. और ड्राई प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इज स्लो. और वेट प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इज कंपेरेटिवली फास्टर. एंड ड्राई प्रोसेस की बात करें सीमेंट प्रोड्यूस इज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. और वेट प्रोसेस की बात करें तो सीमेंट प्रोड्यूस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. ड्राई प्रोसेस बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस. और वेट प्रोसेस बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज समवॉट हायर. जी. So our first step, that is mixing is completed. Now the second step is burning. अब देखो मिक्सिंग होकर हमारा जो बर्निंग रेट क्या है. क्लीन. ठीक है, क्या क्लीन. सो ग्राउंड मिक्सर इज बर्न इन रोटेटरी क्लीन. ठीक है, तो जो भी हम लोग मिक्सर बनाए हैं द ग्राउंड मिक्सर इज बर्न इन रोटेटरी क्लीन rotating at 2 rpm with a slight inclination of 3 to 6 degrees. ठीक है जी. The ground mixer is burned in complete cycle. The ground mixer is burned in rotatory clean. The ground mixer is burned in rotatory clean, rotating at 2 rpm with a slight inclination of 3 to 6 degrees. Yeah. The ground mixer is burned in rotatory clean. The ground mixer is burned in rotatory clean, rotating at 2 rpm with a slight inclination of 36 degrees. With a slight inclination of 36 degrees, the ground mixer is burned in rotatory clean. The ground mixer is burned in rotatory clean. ठीक है, the ground mixer या फिर drum mixer, जो कुछ भी है drum mixer, the ground mixer. Ground mixer is burned in rotatory clean. ठीक है, rotating at 2 rpm with the slight inclination of 36 degrees. ठीक है, the ground mixer is burned in देखो the ground mixer is burned in rotatory clean, rotating at 2 rpm with a slight inclination of 3 to 6 degrees. The materials are added from the top and the rotatory motion of the clean move the sample, move the raw material to the bottom of the clean. The materials are added from the top of the rotatory clean. ठीक है, ठीक है. The materials are added from the top of the rotatory motion. The materials are added from the top of the rotatory motion of the clean. Move the same sample, that is move the raw material to the bottom of the clean.
ठीक है. The ground mixer is burned in rotating. The ground mixer is burned in rotating clean. The ground mixer is burned in rotating clean, rotating at 2 rpm with a slight inclination of 36 degrees. ठीक है. ओके. अब देख. अब हमारा the materials are added on the top of the rotating clean. The materials are added of the materials are added from the top of the rotating motion of the clean. From the top of the rotating motion of the clean, move the sample. Can move clean move the sample. ठीक है. अब देखो. The ground mixer is burned in rotating clean, rotating at 2 rpm with a slight inclination of 36 degrees. ठीक है. The materials are added from the top of the rotating motion of the clean. Move the sample to the bottom of the clean from the drying zone, calcination zone and the clinkering zone. तीनों जोन से पास होने के बावजूद. ठीक है. अच्छा. अगर उसके बाद क्या है कि द क्लीवेज इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन. ये तो हो गया ना. द क्लीवेज इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन. ठीक है. तो हो गया. द मटेरियल्स आर एडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोटेटिंग मोशन ऑफ द क्लीन. The materials are added on the top of the rotating line. Okay. Okay. The materials are added from the top of the rotating motion of the clean. The materials are added from the top of the rotating clean. Move the sample to the bottom of the clean. Yeah. So the cleavage is divided into 3 zones. पहला drying zone, दूसरा calcination zone, तीसरा clinkering zone. So drying zone at 400 degrees Celsius where the water evaporates. ठीक है. It is at 400 degrees Celsius where the water evaporates if the process is the wet process. At 400 degrees Celsius where the water evaporates. ठीक है. It is done in upper part of. बंद कर लीजिएगा. It is done in upper part of rotating clean. ठीक है. And the temperature reaches to 400 degrees Celsius. ठीक है. ड्राइंग जोन क्या होता है? It is done in upper part of the rotating clean. The temperature reaches to 400 degrees Celsius. Here the water evaporates. Here it is the first system, first process that occurred in the rotating clean, and here the water will be evaporated. ठीक है. क्या होता है? वाटर evaporate हो जाता है. So it is done in upper part of rotating clean, and the temperature reaches to 400 degrees Celsius. ठीक है. The temperature reaches to 400 degrees Celsius,
and here the water evaporates. And the second one is the calcination zone. Calcination zone at 1000 degrees Celsius, where when limestone calcium carbonate decomposes to calcium oxide and CO2. It is done in the middle part of rotatory kiln. It is done in the this process is done in the middle part of the rotatory kiln. This process is done in the middle part of rotatory kiln. Yeah. This process is done in the this process is done in the middle part of rotatory kiln. Yeah. बिल्कुल. The temperature, it is done in middle part of rotatory kiln. The temperature reaches to 1000 degrees Celsius, and the calcination zone at 1000 degrees Celsius. When calcination zone at 1000 degrees Celsius, and limestone calcium carbonate decomposes to calcium oxide and CO2. अच्छा देखो, calcination zone at 1000 degrees Celsius, calcination zone at 1000 degrees Celsius, and limestone calcium carbonate and decomposes to calcium oxide and CO2. Yeah. This is clinkering zone. It is done in the lower part of the rotary gland. The temperature reaches to 1400 degrees Celsius to 1600 degrees Celsius. ठीक है. दो तीन चार हो जाएगा, हो जाएगा. दो तीन तीन चार. ठीक है, दो तीन तीन चार. ठीक है, दो तीन तीन चार. टू सी ओ इसमें सही हो, एस आउट टू सी ओ डॉट में सही हो. तो दो तीन तीन चार, दो तीन तीन चार, दो तीन तीन चार. टू सी ओ डॉट एस आई ओ टू सी ओ डॉट एस आई ओ थ्री सी ओ डॉट एस आई ओ थ्री सी ओ डॉट एस आई ओ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. थ्री सी ओ डॉट एल टू ओ थ्री, थ्री सी ओ डॉट एल टू थ्री. So it is done in lower part of rotatory kiln. The temperature reaches to 1300 degrees Celsius, 1600 degrees Celsius. ठीक है, दो तीन दिन चार. टू सी ओ प्लस में सी ओ टू, टू सी ओ प्लस थ्री सी ओ प्लस सी ओ टू प्लस थ्री सी ओ डॉट सी ओ टू, थ्री सी ओ प्लस में एल टू ओ थ्री, थ्री सी ओ डॉट एल टू ओ थ्री, and 4CO dot L2O3 plus Fe2O3 gives out 4CO dot L2O3 plus में Fe2O3. ठीक है जी. दो तीन तीन चार, दो तीन चार, फिर दो तीन 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 चार. ठीक है. डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट.
ठीक है। डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, 2 3 3 4, 2 3 3 4, and the last one is the best. मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग में क्या हुआ? मिक्सिंग हुआ ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। सब हो गया बर्निंग। बर्निंग में रोटी नहीं होगा। एंड तीसरा प्रोसेस हमारा क्रीम जो है बर्निंग हो गया ना। ग्राइंडिंग, तीसरा ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग में क्या हो गया हमारा? ग्राइंडिंग तीसरा हमारा ठीक है। तो देखो कैसे बर्निंग में कुछ नहीं करेगा। तो बर्निंग जो था ऐसे 4 कलर का था ना। बर्निंग में क्या था हमारा? बर्निंग में तो 4 था ना। प्रिंटिंग जोन तक हो गया, ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन जोन, प्रिंटिंग जोन और कूलिंग। लास्ट में था कूलिंग जोन। If the rate of cooling will fast, we will get glassy phase. If the rate of cooling ज़्यादा होगी तो we will get a glassy phase. glassy इसे याद कर लो ना। If the rate of cooling will fast, we will get grainy phase. If the rate of cooling will fast, we will get glassy phase. If the slow, we will their powder phase form. In the slow, we will get the powder phase form. So moderate or medium cooling is preferred, and the last one is the grinding. ये देखो मतलब क्या क्या होगा? ठीक है। ग्राइंडिंग ग्लास होने से बर्निंग था ना। बर्निंग का क्या था? बर्निंग ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या? द कूल क्लिंकर्स आर ग्राइंडेड विद सीमेंट। द कूल क्लिंकर्स आर ग्राइंडेड विद सीमेंट। The cool clinkers are grinded with cement. The cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. The cool clinkers are grinded with cement. The cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. The cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. ठीक है जी। The cool clinkers are grinded with cement to retard the setting. Yeah, the cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. Speed the cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. The cool clinkers are grinded with cement to retard the setting speed of cement. That is 3CO dot L2O3 plus million calcium sulfate
What is MS2? Case of 3 cases sulfate. Packing. Last one is packing. So packing must be moisture free. Okay. Setting and hardening of cement. Setting and hardening of cement. ठीक है. Setting and hardening of cement. So hardening process of cement. When the cement is mixed with the water, it is allowed to stand. This is the setting of cement. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. When the cement is mixed with water and it is allowed to stand, this is known as the setting of cement. And solidification of this mixture is known as hardening cement. And solidification of this mixture is known as the hardening of cement. ठीक है. आगे बंद कर वो आ रहा है फिर When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement, and solidification of the mixture is known as hardening of cement. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement. And solidification of this mixture is known as hardening of cement. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement. And solidification of the mixture is known as hardening of cement. सेटिंग टाइम 5 मिनट, हार्डनिंग टाइम 4 घंटा. ठीक है. पानी डाल कर रखने में 4 मिनट लगता है और उसे मजबूत होने में 4 घंटे लगते हैं. When the cement is mixed with water, it is allowed to stand. This is known as setting of cement, and solidification of the mixture is known as hardening of cement. Setting time 5 मिनट, हार्डनिंग टाइम 4 घंटा. Initial setting 3CO.Al2O3 plus 6H2O. सब 3 4 1 तो एक होता है मेरा 2 3 3 4 2CO प्लस में SiO2 3CO प्लस में SiO2 3CO प्लस में Al2O3 4CO Al2O3 plus में P2O3. राइट ना.
ये हो गया। ठीक है, एक है हमारा, ये है हमारा क्लिंग क्रिंग क्लिंग क्रिंग जो क्लिंग क्रिंग जो है देखो क्लिंग क्रिंग क्लिंग क्रिंग। लेकिन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में बात किया जाता है। सेटिंग हार्डनिंग में पहला इनिशियल सेटिंग सिंगल सेटिंग सेटिंग यहाँ पर याद करने की जरूरत है। ठीक है, 3-4 का नंबर करते थे 1 4 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 3 तो 3 CO डॉट में Al2O3 प्लस में 6H2 इसका डबल के साथ 3 CO डॉट Al2O3 डॉट 6H2 प्लस में हीट निकलेगा। फिर चौथा हमारा 4 0 Al2O3 या फिर 2O3 प्लस में 4H2। अच्छा, यहाँ पर तो डबल नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। ये नहीं रहेगा, ये यहाँ हो गई कैमरा ऐसे हटाओ। ठीक, 4 है, 3 आ जाएगा 3 CO Al2O3 डॉट में F2O3 2O3 H2 आ जाएगा H2। ठीक है, 3 CO डॉट में Al2O3 डॉट में H2 F2O3 3H2 बचा, 3 H2 बचा, फिर 3H2 बचा और CO प्लस में CO डॉट F2O3 डॉट में H2 प्लस में हीट निकलेगी। 1 CO2 मतलब CO डॉट में CO2 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डॉट CO2 4 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3 डॉट F2O3 प्लस 4H2 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3 डॉट H2 H2O3 F2O3 प्लस में CO बचा, CO F2O3 प्लस H2 हीट निकलेगा।
एंड द लास्ट टाइम की बात किया जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनल सेटिंग में बात करें तो टू CEO टू CEO डॉट SIO2 किधर वही हो गया हमारा होगा 4 3 1 टू CEO डॉट में SIO2 2 times of 2 CO डॉट SIO2 प्लस में 4:2 6 जाता है 6 ऐसे ही होता है 4:2 टू टाइम्स ऑफ CO डॉट में 2 times of CO डॉट में SIO2 2 times of CO डॉट SIO2 प्लस 4:2 3 CO मैंने 4 है तो 3 CO डॉट में 2 SIO2 डॉट में 3H2 तो CSIO2 ठीक है देखते हैं तो 2 times of 2 CO डॉट SIO2 प्लस में 4:2 इट्स ऑफ 3 CO इसको ऑल करके मैं कर सकता हूँ 4 CO डॉट SIO2 ठीक 4 है 4 में से 3 CO प्लस 2 SIO2 और 3 इसको निकाल दिए तो हमारे यहाँ पर बचा बेसिकली यहाँ पर हमारा बचा तो कहाँ से अगर हम लोग 3 CO निकालिए बचा यहाँ पर CO डॉट में 2 SIO2 ठीक है ये 4 CO2 3 CO डॉट में 2 SIO2 CO डॉट में 2 SIO2 डॉट में H2 ये बचा है हमारा ठीक है जैसे अगर हम कैल्शियम OH का 4 ग्लास अगर हम निकाल देंगे तो फिर हमारा 2 SIO2 बचेगा ही प्लस में हीट निकलेगी
थ्री सी ओ डॉट में टू एस आई ओ टू डॉट में थ्री एच टू और कार्बनिक डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो इसमें तो एक नहीं बन पाएगा तो बन जाएगा प्लस में सी ए इसका होल ट्वाइस। जो बनना भी बनाओ, ज़्यादा दिमाग में लगाओ, जो है वही बताओ, सिंपल। थ्री सी ओ डॉट में टू एस आई ओ टू प्लस डॉट में थ्री एस टू, थ्री सी ओ डॉट टू एस आई टू प्लस थ्री एस टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ सी ए। नहीं 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 नहीं, सी एच का होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी, ठीक है। अंदर 143 नाउ दिस इज देयर इज अ टाइम ऑफ टू। टू क्या है, थ्री सी ओ डॉट में एस आई ओ टू, सिंपल। थ्री सी ओ डॉट में सी ओ टू का टू टाइम्स ऑफ, और सिक्स एच टू पहले में तो सिक्स एच इसमें जाओ, सिक्स एच टू करेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दो हो जाएगा। देखो थ्री सी ओ, ठीक है, थ्री सी ओ एस आई ओ टू थ्री एच थ्री सी ओ डॉट में टू एस आई ओ टू डॉट में थ्री एच टू प्लस थ्री सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। एक मिनट भाई, हाँ सही, ठीक है। सो टू टाइम्स ऑफ थ्री सी ओ डॉट एस आई ओ टू प्लस में सिक्स एच टू गिव्स आउट थ्री सी ओ डॉट में टू एस आई ओ टू डॉट में थ्री एच टू गिव्स आउट, देखा सो लेके याद करो, थ्री सी एच कॉल्डस निकलेगा, थ्री सी एच कॉल्डस निकलेगा। तो ऑक्सीजन कम से कम तीन होनी चाहिए, ऑक्सीजन कम से कम तीन होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है जी. So if two dissimilar metals are to be used in contact, if two dissimilar metals are to be used in contact, if two dissimilar metals are to be used in contact, their position in electrochemical series should be close as possible. If two metals have to be coupled, use insulation between them. If two metals have to be coupled, use insulation between them. ठीक है जी. अच्छा मेटल्स की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिंग ऐसे कौन कह रहा है भाई बाई यूजिंग इनहिबिटर्स. अरे यार इधर गाना चल रहा है.
The design should be such that water is drained completely and retention of moisture should be as low as possible. The design should be such that water is drained completely and the retention of moisture should be as low as possible. कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि if these millimeters are to be used in contact जैसे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, मतलब कि द डिजाइन शुड बी सच दैट वाटर इज ड्रेन्ड कम्प्लीटली एंड रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर शुड बी एज लो एज पॉसिबल. द डिजाइन शुड बी सच दैट वाटर इज ड्रेन्ड कम्प्लीटली एंड retention of moisture should be as low as possible. The retention of moisture should be as low as possible. Yeah. Design having sharp corners. ठीक है. Okay. So design having sharp corners and recess should be avoided because dust and moisture particles may accumulate and can cause corrosion due to differential aeration. ठीक है. Poor design sharp bends, better design smooth bends. The anodic parts should be either readily replaceable or made thicker for longer life. The anodic parts should be either rapidly replaceable or made thicker for longer life. ठीक है. The equipment should be supported on stands to allow. ठीक है. What is electrochemical series? Electrochemical corrosion यहाँ हम देख सकते हैं, बट इससे पहले हम क्या था हमारा how corrosion can be prevented by metallic coating and using corrosion inhibitors. Using corrosion inhibitors. ठीक है. Using corrosion inhibitors. तो ध्यान सुनना. corrosion inhibitors का इसमें यूज ही नहीं हुआ अभी भाई. By using inhibitors, देखो, the substances which are added from outside to inhibit the corrosion are known as inhibitors. ठीक है. The substances which are added from outside to inhibit the corrosion are known as inhibitors. Anodic inhibitors क्या होते हैं? They react with metallic ions of anode and form insoluble precipitate which is obsessed on metal, forming a protective. ठीक है. जी बिल्कुल. By using inhibitors, the substances that are from outside to inhibit the corrosion are known as inhibitors. ठीक है. एनोडिक इनहिबिटर्स की बात किया जाए तो दे रिएक्ट विद द मेटेलिक आयंस ऑफ एनोड एंड फॉर्म insoluble precipitate which is observed on metal surface for forming a. ठीक है. अब देखो, by using inhibitors the substances which are added from outside. ठीक है. ठीक है. अब देखो, अब देखते हैं हम लोग. By using inhibitors which are added from outside to inhibit the corrosion are known as inhibitors. Anodic inhibitors की बात किया जाए तो they react with the metallic ions of anode and form insoluble precipitate. They react with the. ठीक है. आ गया.
The substances which are added from outside to inhibit the corrosion are known as inhibitors. The materials which are added from outside, ठीक है, anodic inhibitors. They react with the metallic ions of anode and form insoluble precipitate which is observed on the metal surface, forming a protective film of barrier. Alkali phosphorus chromates. ठीक है, एनोटिक इनहिबिटर्स हो गया ना, एल्कली फास्फोरस क्रोमेट सब होते हैं. कैथोडिक इनहिबिटर्स में क्या हो जाएगा? दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन देयर बाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ ओवरऑल corrosion. ठीक है, दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन देयर बाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ ओवरऑल corrosion. ठीक है जी, दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन thereby reducing the rate of overall corrosion. In normal में alkaline medium, in acidic medium की बात करें तो ठीक है जी. तो हाफ O2 प्लस में H2O प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस 2H प्लस प्लस 2 के साथ H2. सब रिएक्शन से याद कर लो ना. ठीक है, हाँ एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने और वो किया यहाँ पर. देखो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मोटर, प्रॉपर सिलेक्शन पे जाए तो हम लोग corrosion can be minimized by how corrosion can be prevented by metallic coating and using corrosion inhibitors. प्रॉपर सिलेक्शन मेथड. ठीक है, corrosion can be minimized by corrosion can be minimized by पहला प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटल, आफ्टर दूसरा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन. पहला यूजिंग प्योर मेटल्स, यूजिंग प्योर मेटल्स, यूजिंग प्योर मेटल्स. तो देखो यूजिंग प्योर मेटल्स में क्या है भाई,
Geo Taco Gio, welcome to our stream. And I am just preparing for my semester exams.
ठीक है, देखो corrosion can be measured by minimized by first one is the proper selection of metal and the second is the proper selection of design. तो proper selection of metal में पहले using pure metals. अच्छा, using pure metals में क्या बोलते हैं, impurities in a metal cause heterogeneity. Impurities in a metal cause heterogeneity which lead to the corrosion. Therefore the corrosion can be minimized by increasing the purity of the given metal. Therefore the corrosion can be minimized by increasing the purity of the given metal. By increasing the purity of the given metal. अच्छा, दूसरा है using metal alloys. अच्छा, corrosion can be minimized by allowing the metals the suitable elements in either of the, ठीक है, given two ways. ठीक है, corrosion can be minimized by allowing the metals with suitable elements in either of the two ways. Corrosion can be minimized by allowing the metals with the suitable elements in either of the two ways. By suitable elements, allowing the metals with suitable elements in either of the ways. Elements in either of the ways. In either of the two ways. ठीक है, in either of the two ways. In either of the two ways. ठीक है, कौन कौन से? Homogeneous alloys and heterogeneous alloys. Homogeneous alloys and heterogeneous alloys. Homogeneous का होता है कि completely soluble solid solution. Completely soluble solid solution. ठीक है, completely soluble solid solution. And example stainless steel. अपने मतलब बैकग्राउंड पे भी नहीं यूज कर सकते. कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन, स्टेनलेस स्टील. बीटेक बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन करते थे, बीटेक वाले पर बहुत ज़्यादा रहा हूँ यार. कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन. होमोजीनियस अलाय कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूशन, स्टेनलेस स्टील. हेट्रोजीनियस alloys का तो मिक्सचर ऑफ द टू सेपरेट फेजेस. एग्जांपल सिलिकॉन आयरन allow for acid resistance. ठीक है जी.
Okay, everyone. So we have just completed our today's target. Today is the day 92, and we have just successfully completed it. So we'll meet tomorrow with more energy and more focus. So it's a time to end this system here. ठीक है, bye bye. Have a wonderful day. Bye bye. कल मिलते हैं भाई.